गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आज का मार्केट का डे आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। टुडे वी ओपन विद अ गैप डाउन एंड बोलते हैं यूजुअली जब इस तरह का गैप डाउन होता है तो मार्केट goes down 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 and most of the time it is true and today also it was true, but I think it reversed, or it would I would say that it recovered most of its losses. अगर हम डे का लो देखें तो समवेयर अराउंड 34218 से इट क्लोज समवेयर अराउंड 34559। सो फ्रेंड्स, हमें देखने वाली चीज यहाँ पे ये है कि मोस्टली अगर मैं आज की बात करूँ तो दे हम कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस बहुत कम ले रहे हैं, क्योंकि देयर इज अ too much of risk involved if you are a trader who is dealing on the one side without hedging. So in this kind of a market, you can easily lose somewhere around 50 to 60% of your portfolio value if you're invested in a day's time. So let's talk about intraday opportunities जो हमारे पास आज थी and कहाँ पे. So if you see, CPR was way above, which was again not touched. It went down, down, down. It did not. The S1 support and S2 support was also breached. If you see here, I have drawn one line, blue color line. Now this was an area where again and again market was going down. It was coming up, again it went down, come up, again went down, come up, again went down, come up, again went down. So it happened at approximately 1, 2, 3, 4 times in a row. And when it happened fourth time in a row, I was a bit confident कि यहाँ पे एक अच्छी buying आ रही है and we can expect a pullback from here at least till the level that is yesterday's low of 35706। अगर मैं बात करूँ तो this one, if I'm right, yeah, 724 के आसपास, 34724 के आसपास जो कल का yesterday लो था, मुझे था कि कहीं ना कहीं मार्केट वहां तक या S1 का जो सपोर्ट लेवल है वहां तक जरूर जाएगी. So अब अगर मैं देखूं यहाँ पे तो I entered my personal position around about exact 34,500, because for me, if you see, all these 5,500 gaps are actually the important support or resistance level. And after then that it went up, but a big selling came here. But मेरी ये हैबिट है कि जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, मैं उससे 10-20 पॉइंट नीचे का ही अपना स्टॉप लॉस रखता हूं. तो इवेंचुअली मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ. एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट इज, इधर भी जब ये इतना बड़ा मेजर सेल भी अगर आया तो भी इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है. इफ यू कॉन्स्टेंटली सी दिस, and it has not gone down it, and again it has recovered. So I was able to make somewhere around 70 odd points and exit the day around about 3565 or 70, if I'm right. I'll just show you my day book. So it's again a game of patience, as well as, I would say, combined with knowledge, and how much you can play with fire. Because कहीं ना कहीं अगर देखें तो कई बारी मल्टीपल चांस थे. इस टच को देखने के दो नजरिए हैं. मेरे को नहीं पता कि लोग मार्केट में क्या बोलते हैं कि अरे यहाँ पे, बट अगर मैं इस तरह इस लाइन के ऊपर दो तरह के बंदे अवेलेबल थे. पहले जो बोल रहे थे ये बार बार यहाँ पे क्लिक कर रहा है, ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसलिए नीचे जाएगा. दूसरे जो कह रहे थे ब्रेक करेगा और ऊपर जाएगा. So it is more of how you can minimize your losses and how you can maximize your profit, and then how much you can actually withdraw from your account consistently. A consistently green is more important, whether it is small, whether it is large, rather than a continuous red. But हमें एक चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे कि इसमें लॉसेस होंगे, और उन लॉसेस को टैप करने का ही गेम है ये सारा.
सो अब कल की अगर मैं बात करूं, मैं अगेन आज यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 34371, दैट इज 350 के आसपास, जो 350 से 400 वाला रेंज है, ये 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे का, ये रेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहीं ना कहीं पे देगा। क्योंकि यहाँ से अगर कल हम गैप डाउन से भी खुलते हैं, मुझे जहां तक लगता है हो सकता है हम कल पॉजिटिव खुलें, क्योंकि आज एक प्रेशर और भी था। अगर हम सबने अपनी इकोनॉमिक टाइम्स की आज की न्यूज पढ़ी हो, तो एक अदानी ग्रुप के ऊपर बात थी। हमें किसी ग्रुप का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए आई एम कोटिंग इकोनॉमिक टाइम्स दैट द fund of Mauritius, who has invested most of the value, approximately $7 billion in Adani Group. Wow, I don't see that news now anymore. It's somehow a risky fund, and let's see how it goes. Let me Adani Fund Economic. Yes, this one. Four Mauritius based funds. So this news also I would say was something. Stocks have history of wrong bets. So before they put about 90% of their under management in the Adani Empire, the funds. So I think कहीं ना कहीं इस न्यूज का भी हमें एक था कि शायद मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगी, बट आज की डेट में अदानी के शेयर प्राइसेस पे मॉर्निंग में जरूर इस पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया था, 2-1% का, बट ओवरऑल अदानी शेयर्स वर रेडी टू टेक इट. आई थिंक Adani Group was ready to take it head on because they did not expected uh, what happened in a few months back should happen again with them, where I think this was the crisis which happened from. So कहीं ना कहीं इसका भी एक impact था. So fair enough. Let's see how it goes tomorrow. And I'm very positive that market will open positive until and unless we have something. But we have to be very, very careful in these scenarios. We'll again post something around daily market analysis, how you should actually. Uh, so guys, if you see, मुझे लगता है कल मार्केट पॉजिटिव खुलेगी. अगर मैं एनएससी के चार्ट्स पे देखूं, we have again closed above 15,700 today. Most of the pressure came from bank nifty and financial, steel, and some of the banking stocks did well. So auto could be something which is going to be watched for tomorrow, because Maruti again is not in line with expectations. So again, I think it's going to be an interesting day, being an expiry day, and let's see how it goes. Thanks for your time this evening, and I'll try my best to help you guys or to learn from this market and explore whatever opportunities are available for a better future. Thank you.